the plan for today is to go to Leh Palace. GoPro मिल चुका है after being lost for 2 days. संडे शाम को शांति स्तूपा भी खोया था और कल ट्यूसडे को हम जाकर एक लोकल फैमिली से अराउंड 25 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है चुशूत, वहाँ से जाकर लेके आए हैं. सो रियली हैप्पी अबाउट दैट. यहाँ से ले पैलेस जाएंगे, वहाँ से सीमो कैसल भी कवर करने की कोशिश करेंगे इफ़ टाइम अलाउस. वीकेंड पे वी आर प्लानिंग टू गो टू सोमुरिरी लेक. Still hard to pronounce that name. But today the plan is to go to Leh Palace. Leh Palace is one of the prime attractions of Leh city. ये एक hilltop के ऊपर बना हुआ है and it gives a panoramic view of the entire Leh town. It was built in the year 1600 and it used to be the residence of the royal family of Ladakh until the mid 19th century. After the Dogra forces of Jammu took over Leh city, उसके बाद वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी वो लेह पैलेस से स्टोक पैलेस शिफ्ट कर गए थे. उसके बाद लेह पैलेस काफ़ी टाइम तक अबैंडन रहा एंड इट वाज ऑलमोस्ट इन रूइंस. अभी इसमें काफ़ी रेस्टोरेशन वगैरह चल रहा है एंड इट हैज़ बीन टू अ लार्ज एक्सटेंट इट हैज़ बीन रेस्टोर्ड एंड उसमें रॉयल फैमिली तो रहती नहीं बट इट सर्व्स एज as one of the prime tourist attractions of Leh city. पैलेस सुबह आई थिंक 8 या 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक सनसेट के टाइम तक खुला रहता है. You can visit here anytime during the day. There's a motorable road that goes all the way to the entrance of the palace. And its location is marked in Google Maps, so you can just search Leh Palace in Google Maps and it will route you all the way to the palace. Irrespective of where you are staying in Leh Palace तक जाने में hardly I think 15 से 20 मिनट लगते हैं and Leh Palace का टूर करना and वापस आना I think it is an affair of 2 or 2.5 hours from your hotel. Even if you are not interested in historic monuments, right? अगर पैलेस वगैरह में ऐसे historical monuments में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी I will recommend visiting Leh Palace because वहाँ से Leh town का व्यू काफ़ी अच्छा आता है and if you are into photography you will get some great shots from the palace. वहाँ पर काफ़ी सारे एक म्यूज़ियम ही बना हुआ है वहाँ पे and काफ़ी सारे बुद्धिस्ट monuments हैं वहाँ पर ancient. You can see those. I will not say कि it is the exact palace जो कि एक टाइम पर होता था 1600 में because अब जो structure है that is the one that was built by the ASI and the one that was restored but it's still a beautiful palace. It's still a great place to visit and it is in my opinion if you are visiting Leh then you should definitely spend some time at Leh Palace.